Hello everyone and welcome to my YouTube channel United Road. So guys, आज in terms of incoming we are not going to talk. ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई बिकॉज बहुत लोगों को होता है कि अपडेट क्या तो भाई इन टर्म्स ऑफ इनकमिंग हमारे पास कोई अपडेट नहीं है वही घिसा पिटा बहुत क्लोज है हमारा बात ये हो जाएगा वो हो जाएगा बट यस वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ हु माइट बी लिविंग अस तो उस पर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक बहुत सारे बंदे हैं यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हु आर likely to leave the club by the end of the window. ठीक है उसके हमें मिलते कितने हैं कितने वी आर एक्सपेक्टिंग इन सब चीजों पर बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारे पास लाइक 6-7 नाम है यार at this point of time 6 to 7 names we have which we are going to talk about so शुरू करते हैं बाकी जो भी लोग आते जा रहे हैं भाई कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग व्हिच आई ऑलवेज से उसमें कोई कमी ना रहे भाई राहुल भाई गुड इवनिंग हमारे यहाँ तो भाई हमारे क्या हम सबके यहाँ तो भाई रात हो चुकी है बट चलो गुड इवनिंग से काम चला लेंगे फॉर द टाइम भी ये भाई देखो ये होना ही था थोड़े टाइम की बात थी आफ्टर दैट एक बार पुलिस वाले उतरते तो उसके बाद फिर यही होना था तो और उधर अभी थोड़ा बहुत नेट भी बन रहा है यार इन गुड़गांव ठीक है दे आर लाइक यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है आउटस्कर्ट्स जो भी है थोड़ा बहुत वो है और उसके बाद आगे जाके है जो है शहर तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ Maguire का saga because I am calling it a saga at this point of time because this is turning into a saga. This is turning into a saga. Saga इसलिए यार क्योंकि West Ham are very keen on Maguire. ठीक है West Ham very keen on Maguire at the same point of time Maguire is not keen at all. 20 million was never going to be enough but 20 million तो हमने आते के साथ ही रिजेक्ट कर दिया और जो कि हमें करना बनता भी था ठीक है सिंपल सी बात है तो Maguire वेस्ट हैम आई थिंक इट्स अ मैच मेड इन हेवन वो बंदा जाना नहीं चाह रहा आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाई मतलब लिटरली व्हाई तो भाई राइट साइड बस यही तो है ही राहुल भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट Fatima is very good. He is very good. And there is a reason, you know, we are willing to pay almost 30 million. And it's not like that he is going to be a starter. He is going to be a backup. So, my Keegan update. No one cares, भाई. No one cares. These are clueless journalists. इनके पास कोई knowledge नहीं है, कुछ नहीं है at this point of time. Don't even bother. They don't have any update. Same thing and again. That's it. But to be very honest, we don't need replacement for Fred. We don't need replacement. If we sell McTominay, as soon as we get Amrabat, इन दोनों की tension नहीं रहेगी. But yeah, if we are letting go of Donny, then who are we going to play as number? मतलब like Bruno का backup because that's definitely gonna happen. So let's see. भाई फ्रेड के लिए हमने बेफालतू में दिए थे पैसे ठीक है फ्रेड वाज नेवर अ 50 million player we panicked we paid the money so yeah Maguire situation is something which is out of anyone's control because it's definitely controlled by Maguire अगर जाना नहीं चाहता we cannot do anything and by welcome to the stream Sunil bhai welcome भाई we need it but we are not going to get it next summer हम शायद पहला साइनिंग सेंटर बैक ही करें but this season I don't see it happening unless or until there is a change of heart with Maguire तो वहां से लाओगे बैकअप पॉसिबल ही नहीं है नहीं देखो this is rubbish this is absolute rubbish if anyone is feeling that we are going to get 40 million for Maguire they should just resign and go to some place else even if we are getting 30 million in add-ons let Maguire go let the team talk to Maguire and then we will see whether he wants to leave or not of course boy, of course but I don't talk about players who is not at this point of time a part of the squad simple
हाय भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। यस भाई, वेलकम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? अनुज भाई, वेलकम। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मगवायर वाला जो सिचुएशन है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है यार। दैट्स व्हाई आई सेड वी विल टॉक अबाउट मगवायर फर्स्ट, बिकॉज़ मगवायर डिवाइड्स ओपिनियंस, ठीक है? एंड मगवायर इज हेटेड बाय मेजॉरिटी, ठीक है? हेट यूज कर रहा हूँ, बट दैट्स द ट्रुथ, ही इज हेटेड बाय मेजॉरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, वेलकम टू द वायलेंस। किस टाइप का होगा? रूड टाइप का होगा, बहुत अच्छा होगा। भाई देखो, ही इज एन एब्सोल्यूट टैंक। व्हेन आई से एन एब्सोल्यूट टैंक, आई मीन इट। जय भाई, एक सेकंड रुको। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ यार, ऑडियो मेरे हिसाब से तो ऑडियो इज फाइन। मेरे हिसाब से ऑडियो, हाँ, ऑडियो बिल्कुल ठीक है भाई। ऑडियो बिल्कुल ठीक है, आप बताओ। हाँ भाई, कमिंग बैक टू हॉयलैंड। देखो यार, रूथ वैन निस्टेलरॉय के साथ अभी कंपेयर करना कोई लॉजिक नहीं है। ही इज 20, ही इज 6'3", ही इज वेरी फोकस्ड। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है भाई, अब बताओ, अब प्रॉब्लम हो रहा है? मैंने माइक को थोड़ा सा और पास ले आया हूँ मैं। लेट मी नो अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो। वेदांत भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। Vedant, but to be very honest, we need at least 2 to 3 more signings to challenge for Premier League. मुझे नहीं लगता कि होगा, बट अगर कर देते हैं तो that would be very very great. You know, भाई माइक मैं सामने ले आया हूँ, थोड़ी सी दूरी पे था माइक, लेट मी नो। ले आया हूँ भाई, माइक क्लोज ले आया हूँ मैं। अब मुझे बताओ कैसा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, 25 साल का बंदा है। ग्लिच टाइप का साउंड आ रहा है भाई, आना तो। आई डोंट नो क्यों आ रहा है। भाई एक सेकंड दो। भाई अब बताओ यार, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो पा रहा है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अचानक से कैसे ग्लिच आ गया, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड।
भाई अब आ रही है आवाज? आई एम रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है यार। चलो फाइनली, चलो आई विल सेट अप द माइक लेटर ऑन। रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी। लेट्स स्टार्ट अगेन। बहुत अटक रहा है भाई, पता नहीं क्या इशू है। मैं इसको बाद में करूंगा, मैं इसको बाद में ठीक करूंगा आफ्टर द स्ट्रीम। अभी के लिए बस थोड़ा काम चला लो। आई डोंट नो व्हाई दैट इशू केम इन। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था सब। चलो बाद में करता हूँ मैं। भाई अब होने तो ब्रेक यार, बाद में ठीक करूंगा। अब बीच में अब क्या ही बोलूं। भाई माइक रिमूव कर दिया है मैंने फॉर द टाइम बीइंग। ऑलराइट, लेट्स कीप मूविंग देन। चलो अब ठीक है ना, चलो बढ़िया। हेलो भाई, हेलो। भाई 15 to 20 मिलियन मैं बोल रहा हूँ। 20 मिलियन अगर मुझे मिलेगा मैं जाने दूंगा। 20 मिलियन पाउंड्स, नॉट यूरोस। सिंपल सी बात। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितने का बिका है वो नहीं पता भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अनडिस्क्लोज्ड फी है, किसी को नहीं पता व्हाट्स द एग्जैक्ट अमाउंट। वो बाद में पता चलेगा। भाई देखो ज्यादा नहीं होने वाला। 300-400,000 कुछ हो गया तो बहुत बड़ी बात है। प्रेजेंट भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। शुक्रिया भाई। भाई आई थिंक ही विल बी अनाउंस्ड इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड। अरे भाई मेरे को नहीं चाहिए यार, फालतू की बातें मत करो। टीम की बात कर रहा हूं मैं। मुझे देख के क्या करेगा भाई, मैं थोड़ी यूनाइटेड चला रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। मैं भाई बोल रहा यार, देखो लोन पे मत दो, लोन पे मत दो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ डॉनी को, इफ यू आर लेटिंग गो इट्स टोटली फाइन। पैसे लो यार, क्योंकि उसके बदले हमें वी विल हैव टू ब्रिंग इन अ प्लेयर। Manuel is injured at this point of time. We have no idea what's going to happen at this point of time with McTominay. We have no idea what is going to happen with Fred. Fred को भी भाई अभी कोई बिड नहीं आ रही। Galatasaray was the team, they wanted him at this point of time। अब वो Galatasaray को हाँ बोल दिया उसने, तो भाई Galatasaray की तरफ से भी कोई बिड नहीं आया है फाइनल जिसपे हम बोल दें हाँ। उत्कर्ष, वेलकम टू द स्ट्रीम। थोड़ा यार, अरे तुम प्रीत भाई, तुम्हें देखा मैंने, कमेंट लिया, कमेंट लिया मैंने, नहीं लिया ना, चिल करो। एग्जैक्टली जैसे मैंने इग्नोर किया तुम भी इग्नोर कर दो। कौन पूछ रहा है भाई इनको, यू नो। लिवरपूल फैंस ओवर हियर जिनको नॉलेज भी है चीजों की। एंड गाइस माइक थोड़ा सा इधर उधर हो गया था बस। वेदांत भाई थैंक्स अ लॉट। वी कैन चैलेंज फॉर द प्रीमियरशिप। मैंने इसका आंसर दे दिया था बट आई गेस द माइक वाज नॉट वर्किंग, तो मैं फिर से आंसर दे देता हूं। इस सीजन मुझे नहीं लगता वी कैन चैलेंज unless or until we get a backup cover for CB, you know, another striker. Amrabat most likely we are going to take, but हॉयलैंड एंड मार्शियल के भरोसे प्रीमियर लीग में इस सीजन नहीं जा सकते, बिकॉज यार हॉयलैंड पहला सीजन, मार्शियल वी डोंट नो वेदर ही इज गोइंग टू बी फिट और नॉट। सो डॉनी प्लस मार्शियल 35 40 ब्रो, 40 इन माय ओपिनियन, है ना, मेरे हिसाब से 40। ठीक है, आराम से मिल सकते हैं भाई। देखो एक ही चीज बोलता हूं यार, तुम दूसरों पे फोकस मत करो, शेयर योर व्यूज। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम्हें जो बात करनी है उससे बात करो। एग्जैक्टली तुम्हारे जो व्यूज है भाई रिगार्डिंग द टीम, रिगार्डिंग अदर टीम्स, जो भी है तुम्हारे जो व्यूज है उस पर बात करो। दूसरा क्या बोल रहे इग्नोर करो यार। यू आर नॉट, तुम्हें उसका रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल। फ्रेड एंड डॉनी एंड फॉर अमराबाट। हाँ भाई, दोनों मिला के वी कैन गेट अमराबाट।
कहीं भी भेजो मेरे भाई, पैसा मिलना चाहिए, कहीं भी भेजो, वी नीड मनी, इट्स एज सिंपल एज दैट. यस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, एज आई सेड इट्स नॉट वेरी कॉन्क्रीट, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं दिया है. बट if he is rejecting, I don't know why. Pranav, are you all good? How it's going with you? 85 plus points. Okay. FA Cup, UCL or semis. Chalo. If this happens, I will consider it a very successful season. Vishal bhai. 8. I have said that before, bro. I have said that before. 8 out of 10. कोई सीन नहीं है भाई, कोई सीन नहीं है. रिजवान भाई, मोस्ट लाइकली ही विल गेट नंबर 17 अगर हमने फ्रेड को जाने दिया. अदरवाइज क्या नंबर होगा पता नहीं भाई. Amrabat can play both as an 8, both as a 6. Simple. भाई देखो, controversial opinion is fine, ठीक है. Delusional और agenda driven is not fine. बाकी तुम्हें जो बोलना है बोलो. मुझे वो कमेंट लेना है या नहीं लेना है वो मेरे ऊपर, तुम्हें बोलने से नहीं रोक सकता मैं. It's as simple. But 85, that would be definitely around challenging for the league, but I don't see, unless or until we, to challenge for the league with this team without a backup center back, or without a proper striker, in my opinion, I'm just giving my opinion, we will need a Liverpool-like season, during the COVID where they had no bench strength, but their first 11, they kept on playing. They never got injured. That sort of a season is what we want. So let's see how that goes. Glazers का भाई अभी कोई न्यूज नहीं है. At this point of time, it's the same thing with the Glazers. कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको लेके we can be very very excited. कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेके we should be very very demotivated. क्योंकि सेम ही चीज चल रहा है भाई, time and time again. So as I said, rubbish opinion, but that's fine. You have written it. Nothing to debate on it. Anjal bhai, welcome to the stream. Danish bhai, put in bro. Thanks a lot for joining in, man. Guys, as I always say, do check out the membership at once. Okay, if you like it, then fine. If you don't like it, then definitely tell me. What I should improve with the memberships. Because obviously, I will get better if you are helping and supporting me out. Always great to have different opinions. आराम से 110 plus. Fair enough. As I said, अगर पैसा मिल रहा है जाने दो. Don't let him go on a free. It's as simple as that. Not on a free. उसको लोन पे नहीं जाना देना है भाई. तुम्हें उसके वेजेस भी देने पड़ेंगे. Makes no sense. भाई अब क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं. I have no hopes with him, but let's see. But we still lack a centre back. We still lack a backup striker. But yeah, majority of the team is there now, Adil bhai. Martial bhai, Martial nahi Martial. Bhai, rubbish links. Absolutely rubbish links. Neon, thanks a lot for joining in, man. Definitely Glazers out. 20 to 25 I will take. Any day. If Martial plays, he has the caliber. Bhai, wahi wali baat hai na. If there is a very big if. Exactly, that's the problem. अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई. Let the right play. We have to look at our team. Will our injury crisis go away now that? We are hoping for that. Bro, we are hoping for that. We can all hope. So, but I am fine. How are you? Of course, Donny. Of course, Donny. Maguire should not be near the team. हमें उसके ऊपर बैकअप चाहिए. Donny as a luxury signing, उसको luxury क्या बोलते हैं? Backup भी we can play, but center back we definitely need to challenge. Simple as that. दे देना चाहिए भाई. नया अगर सेंटर बैक नहीं ला रहे हो, ये वांस को दे दो. एटलीस्ट ही विल बी प्लेइंग. ठीक है, इंजर नहीं रहेगा वो.
हॉलैंड का अनाउंसमेंट भाई सैटरडे हो रहा है। आई विल टेक इवांस। मैंने बोल दिया भाई, टेक हिम आउट ऑफ द टीम। मैं एक ही चीज अब कितनी बार बोलूं भाई? आई हैव ऑलरेडी सेड इट, थ्रो हिम आउट। Devang bhai, no, we are not going after Goretzka. Goretzka will be around 40 to 50 million. We don't have that much money. भाई मेरे हिसाब से देखो, लोग बोल रहे हैं एडिडास इनकमिंग, दैट मींस ग्लेजर्स स्टे। एडिडास अगर इतना पैसा लगा रहा है, so they are also thinking that they will get returns. At this point of time, with someone like Glazers, it will be very difficult. So let's see. बहुत सारे प्रो, वो बोलने को बोल सकते हैं यार, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत सारे बना सकते हैं, but I will just wait and see how it actually goes. Why talk about yourself? Neither you represent the fan base, neither I represent the fan base. So that's why I say it's my opinion. You don't represent United. You represent yourself as a fan. So say you want Greenwood. Don't consider we. Okay, we includes me as well, and I don't want to get included in that. So say you want him. That's totally fine. Not with an abuser. Not with a rapist and an abuser. No. भाई देखो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, undisclosed fee, no idea how much we are getting, but to be very honest, I'm not expecting more than 500,000. Simple. Exactly. You talk about yourself. I will talk about myself. I don't represent the entire fan base. ठीक है? I don't represent the entire fan base. Same, you don't represent the entire fan base. Simple. Why for this reason I will accept it. अरे भाई मेरी आंखें हैं, मेरे लिए उतना काफी है। मुझे इसके अलावा कोई बात नहीं करनी है। जिसको ग्रीनवुड के बारे में बात करनी है भाई, डालते रहो कमेंट। एज आई सेड, आई डोंट एंटरटेन दैट टॉपिक। मैं उस पर ऑलरेडी बात कर चुका हूं बहुत बड़ी। भाई at this point of time, any money for Fred will do that. He is surplus to the requirements. We are paying him wages. Let him go. Simple as that. In my opinion, he might go out on a loan. That's my that's what I feel. That he might go out on a loan. But with United, you never know. Simple. It's as simple as that. हॉलैंड का डेब्यू भाई सैटरडे या संडे में से एक दिन होना चाहिए, but let's see. I am expecting a drop in number of goals, to be very honest, because now he will have a striker by his side as well. I expect his numbers to grow up in terms of assists. If that's not happening, then I will be very disappointed. Sarvagya bhai, welcome to the stream. भाई कुछ नहीं होगा, मैं वही बोल रहा हूँ, we just have to wait and watch at this point of time. We are not sure what's going to happen, Danish bhai. So let the board decide, and we all know how it's going to be handled in UK. हमारे से फर्क नहीं पड़ता यार उनको, हमारे से फर्क नहीं पड़ता उनको। नाइजीरिया के फैंस से वो क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब वहां पे लोग जाएंगे ना, जब वहां पे बू करेंगे, वहां पे जाके उसके अगेंस्ट बात करेंगे, तब होएगा सीन। अभी तो कुछ नहीं। चिराग भाई वेलकम। So then that's the problem with a lot of players that we have in the past, But Sancho, the quality is there, so I'm expecting him to push on this season. Sarvagya bhai, यार थोड़ा साउंड इशू है। I will try to fix it next stream में। बीच में तो गायब ही हो गया था। I will see how how I can get rid of it. आज के लिए थोड़ा सा झेल लो भाई। श्रीधर भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। अरे दानिश भाई छोड़ो, as I said, no point talking about it. क्लब को डिसीजन लेना है, let them take it. We don't have to agree with club decision. Simple. नहीं भाई, he said it. It's on the club. He's not gonna say anything about it.
अच्छा, ल्यूक शॉ कम फॉल्स विंगर खिला दे, कुछ भी, मतलब कुछ भी। भाई यूनाइटेड की टीम खेलेगी, ठीक है, संडरलैंड की नहीं। एथलेटिक वाला माइंडसेट नहीं है भाई हमारा, ठीक है, कि जिरोना के अगेंस्ट भी बस पाक कर दो, 3 सेंटर बैक खिला दो। द वे वी आर गोइंग टू प्ले, वी आर गोइंग टू हैव आवर ओन आइडेंटिटी एंड वी आर गोइंग टू गो टो टू टो। इस वजह से टीम बना रहे हैं, दैट्स वेयर ओले लैक ओले हैड जस्ट प्लान ए, वी आर ट्राइंग टू मेक अ team which is going to challenge on all fronts, not this season, but at least next season, you know। तो ये एथलेटिक नहीं है या फिर ये भाई कोई 18वें नंबर का क्लब नहीं है कि बस पाक कर दो। बस पाक तो भाई हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी नहीं किया था, ठीक है, बस पाक तो हमने जब हम एटिहाद पे गए थे तब भी हम 3 गोल मार के आए थे। तो वही वाली बात है, बस पाक करने का तो कुछ है ही नहीं। मैं ठीक है, व्यूज वगैरह होना इज फाइन यार, बट वी आर नॉट हियर टू प्ले कि भाई तुम बैठो 90 मिनट तक बैठो और एक चांस क्रिएट करके गोल मारो। भाई देखो वही वाली बात है, वही वाली बात है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोगों ने ऐसे ही मतलब प्री सीजन पे अगर डिसाइड होने लगते ना सारी के सारी चीजें, तो फिर क्या ही बात थी। प्री सीजन के फॉर्म पे अगर सीजन डिसाइड होने लगते तो भाई हमारा सीजन कहां से कहां होता है। लुई वैन हाल के टाइम पे तो हम प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग सब जीत लेते। वी विल सी भाई, वी विल सी। भाई वी आर बस पाक करने वाले जो भी सोच रहे हैं भाई, ये होना कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली बस पाक का कोई लॉजिक ही नहीं है यार। प्री सीजन डजंट काउंट, सिंपल एज दैट भाई। प्री सीजन होता है तुम फिटनेस लो, ठीक है, यू डोंट गेट इंजर्ड and you go out and you play in the season, that's it, that's what pre-season is all about। pre-season में इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इंजरी से बचना है and you have to get back to the full fitness, that's it। exactly। अरे भाई प्री सीजन में एंड्रेस परेरा, हाउ कैन यू फॉरगेट एंड्रेस परेरा इन द प्री सीजन। प्री सीजन एंड्रेस परेरा, एवरी टाइम ही प्लेड लाइक पर्लो। भाई कहने की बातें हैं ये भाई। you are judging City based on their game against Atleti in a pre-season, ठीक है भाई, देखते हैं। Ignore Merlin just like I'm ignoring the comments। No need to just let it go, as I said। Views on Dembele, भाई ये कहीं पे भी रहे, फिट तो रहे। I still feel the player is there, but whether he can stay fit or not, देखने वाली बात है। Exactly चिराग भाई, wish people understood pre-season पढ़ लो। Absolutely यार, Buffon took retirement, congratulations and happy retirement to Buffon। 46, legend of the game without a doubt। But I think with Bruno, he can drop in a bit deep as well, Mount can push a bit forward as well। I think it's gonna work, not in every game but in majority of the games। अतुल भाई कोई नहीं ले रहा यार, ये बंदा फिट तो हो। अतुल भाई, this guy needs to stay fit, that's the biggest problem। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, पटेरा इन प्री सीजन वाज अ डिफरेंट prospect altogether। But even if you look at the pre-season, Onana was not pushed by anybody। उनको पता था भाई, if we are trying to create pressure on him with pressing, वो खोल देगा आगे। So बिल्कुल यार, good luck to Nathan Bishop। चलो भाई देखते हैं 12-13 गेम हारते हैं या नहीं। And I am not talking about last season,
I'm not talking about last season. I'm saying the team that we are trying to build, उसमें possession based ही खेलेंगे. ठीक है? Simple सी बात है. And obviously there will be times where, you know, even with the team that we have, against City, against Liverpool, you will have lesser possession. Simple सी बात है. सिटी के अगेंस्ट किसी भी टीम को खिला दो, सिटी के सामने उसके पोजीशन जो होगा भाई 30-35% ही होगा, बहुत होगा. तो Nathan, welcome to the stream, man. Bruno and Mount are very good at pressing. Exactly, bhai. Football has changed. People need to understand. Well, they should watch Mourinho's football. As I said, yeah, you know, all the best and happy retirement to Buffon. एक कमेंट देखा भाई मैंने, he should have retired after 2012 Euros. सर हो गया भाई. But वही है ना, that hunger was there. You know, he wanted to win that elusive Champions League that he didn't win, and unfortunately he could not win it. So, Holland announcement, bhai, I was expecting Saturday, and I am getting Saturday. भाई, as I said, थोड़ा सा टाइम तो दो यार, उसको खेलने तो दो आदिल भाई. Yeah, we should Bishop. How much money? We don't know yet. बिल्कुल यार, बिल्कुल. Kovar most likely going out on a loan. Heaton might be the third choice, but totally depends on Henderson as well. If we are not able to sell Henderson, Henderson will be the second choice. RVP plus Root versus. I will go with RVP and Root, without a doubt. RVP and Root दोनों ही टैपिंग मास्टर्स नहीं है भाई. कोई सीन नहीं है भाई, to be very honest. Decision pending है. Decision क्या होगा, we will get to know before the beginning of the season. So let's see. No updates, right? No updates. At this point of time, we have, you know, he was going to Nottingham Forest, but now Forest is looking for Turner. So let's see. Todibo, bhai, Todibo any day. Branthwaite is at this point of time not even half the player that Todibo is. You know? So I will go for Todibo, but wahi wali baat hai, we need to ship off Maguire. Absolutely. अरे भाई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं जीतेंगे. I'm just saying the analysis that you are putting is not good. That's what I'm saying. World's best side क्या होता है भाई? Football is played for 90, you know, football is played for 90 minutes. We beat them last season. We beat them last season at Old Trafford. We should have beat them in the FA Cup final as well. We were the better team. But then De Gea had other ideas, so it's fine. भाई पता है क्या, इसमें प्राइस का पंगा नहीं है सर भैया भाई. प्राइस का पंगा नहीं है. They are saying the obligation to buy will come into effect only if Henderson plays 30 games. तो मतलब अगर वो पूरे सीजन में 29 पे खोल के खिला के छोड़ दिया, so obligation to buy won't happen. You know, United said no to that. So पैसे से ज्यादा this is the problem. Right, we will create more chances than last season. Now we have a goalkeeper as well. So at this point of time, I'm not worried about creating chances. You know, as I said, I'm worried about injuries. Simple. Worried about injuries more than anything else. Fair enough. Fair enough. You know, midfielders की debate चलती रहती है यार. Scholes was absolute all round. Lampard was a proper goal scorer यार. उतने गोल मार देना midfield से is not a joke. You know, and people who wants to bash me, they can. But for me, he will always be over Gerrard. Simple as that. Neon, welcome to the stream, man. Thanks a lot for the super chat. And guys, 2 super chats today. Vedant bhai, thanks a lot. And Neon, thanks a lot. And Jay us out definitely.
गावी जेसूस समझा नहीं भाई, ये कौन है? गैब्रियल जेसूस। गैब्रियल को गावी ना बोलो भाई। गैब्रियल को गावी ना बोलो। गैब्रियल, हाँ ठीक है, समझ गया भाई। अनपॉपुलर है, अनपॉपुलर ही रहेगा। नॉट एट ऑल, नॉट फॉर मी। इनके कॉन्वर्सेशन के बाद वाली कॉन्वर्सेशन में जरूर रहेगा, इनके कॉन्वर्सेशन में नहीं रहेगा फॉर मी। भाई they know that they have to be very ready and they want to go from game week 1 यार। उनको पता है they cannot let City have the ground। उन्होंने दे दिया तो मतलब खत्म। And it's as simple as that। So that's how they are going absolutely all guns blazing at this point of time। भाई तो unpopular opinion कुछ भी हो सकता है, that's why it's unpopular, but that's what I'm saying at this point of time। कौन जा रहा है भाई लियोनार्डो के लिए? कौन जा रहा है? Who is going for लियोनार्डो? ये तो फैक्ट है भाई, ये तो फैक्ट है। शिवम भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। देखा भाई, देखा। I saw the video, you know, it was horrific and Marcelo could not have done anything here। भाई देखो वही वाली बात है ना, they know they are playing their first team from the, you know, in every game because they know from after the first game they have nothing to offer from the bench in terms of challenging City। ठीक है, so if their first 11 is fighting they will have at least a chance। So they want everybody in the top shape to challenge for the Premier League। Ernesto, welcome to the stream and for City, United, Arsenal, Liverpool। I think यही होगा ही, but let's see। Bayern should have bought Ronaldo instead of। भाई अब क्या किस रीजन से हमारा वो अलग की बात है, but now he is gone। You know, now he is gone। If Bayern gets a striker, they will be one of the favorites for the Champions League। So let's see। Of course, भाई, no one will talk about it। भाई as I said, you know, एक होता है कोचिंग का फैक्टर। I think, you know, few of the players, you know, they could not reach the level because of not that great coaching, in my opinion। So at this point of time, we should enter it। You know, we should enter the race, to be honest। If we are letting Donny go, someone like Kamada on a free, that would be great। लिवरपूल विनिंग चैंपियनशिप, अरे भाई साहब, तो वही वाली बात है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, कि कमाडा का जो सीन है, कमाडा वांटेड टू गो टू एसी मिलान। एसी मिलान के साथ उसका जो डील है वो collapsed। Now Lazio is interested। If we are letting go of someone like Donny, as I said, we should definitely try for Kamada for a free, definitely। We are not looking to buy Goretzka, it's rubbish rumors। भाई अगर फोर्थ पे ला ही दिया है तो होपफुली दे फिनिश फिफ्थ। Hopefully, after spending 200 million, they finish fifth। I will take Chelsea into top 4 here। You know, but अगर आर्सेनल इतना खर्चा करने के बाद if they finish fifth, भाई स्वाद आ जाएगा।
Of course, right? Of course. Not everyone is going to make it at the highest level at United. Few players, they will always be backups. One game he should play. One game. I'm not expecting more than that. So, like, basically, he will get 60 minutes of preseason action at max. भाई वो तो बात की बात है, वो देखने वाली बात है. बट एज आई सेड, अगर आर्सेनल 5th प्लेस पे आई तो मजा ही आ जाएगा. भाई प्लेस से मैटर करता है. प्लेस से मैटर करता है. 200 मिलियन खर्चने के बाद 2 से 5 पे आ गए. यूसीएल खेल के भी क्या करेंगे यार, जितना थोड़ी है उनको यूसीएल. भाई if you are asking about whether he is reliable about the takeover, no one is. वैसे ठीक ठाक है. चलो भाई देखते हैं. यूनाइटेड भाई क्वार्टर फाइनल चले जाए तो मजा आ जाए. क्वार्टर के ऊपर गया देन डेफिनेट absolutely. Holland presentation sort of by most likely. There are also talks of protest on Saturday. Lens game के पहले there are talks of protest, and the moment these protest talks started coming in the social media, ठीक है, टेक ओवर की न्यूज आने लगे कि भाई the parties are in talks and all that. So मतलब यार ये बिके हुए जर्नलिस्ट है. सारे के सारे बिके हुए हैं साले. फैक्ट है भाई, जितना थोड़ी है. वीडियो क्या बोल रहा है भाई? लेंगे यार, टीम्स लेगी. ही इज अ गुड प्लेयर अवेलेबल फॉर लाइक 30 मिलियन. क्यों नहीं लेगी टीम्स? मैं ठीक हूँ संकेत भाई, हाउ आर यू? My realistic expectation, top 3, domestic cup, and quarter final of the Champions League. We will see. But to be very honest, for me, which guy is supporting which team doesn't matter. ठीक है, अगर तुम्हारे views ढंग के हैं, as I said, I have Chelsea fans in there as well, I have Liverpool fans in there as well, Madrid fans भी है. So if you have good views, then कोई problem नहीं है यार. कोई भी टीम सपोर्ट करो. बैंटर चलता है, डिल्यूजन नहीं चलता. कोई अपडेट नहीं है भाई. नो अपडेट एट ऑल. सारे बिके हुए हैं भाई. पॉइंट्स का डिफरेंस है. लास्ट सीजन वी वर लाइक 7-8. जितना हमने लास्ट सीजन किया है उससे हमें एटलीस्ट 15 पॉइंट्स ऊपर लेके आना है. सिंपल. With the signings that we have made. जब तक मेरे पास एक और सीबी नहीं है, मेरे पास एक बैकअप स्ट्राइकर नहीं है, लास्ट सीजन वाज मिरेकुलस यार. लोग मिरेकल बोलते हैं. लास्ट सीजन बिना स्ट्राइकर के, ठीक है, विथ वरान इंजर्ड, विथ लास्ट के कुछ महीने लीचा इंजर्ड, विथ कैसेमीरो सस्पेंडेड, इन सब के बाद भी ट्रॉफी और टॉप 3 ले आए हैं. सो इसके ऊपर इंप्रूव करना है. बट एज आई सेड, बाकी टीम्स का जो प्रोजेक्ट है वो हमसे 2 साल 3 साल आगे है. सिंपल. सिटी का तो हमसे बहुत आगे है. अरे भाई आर्ग्यू की बात नहीं होती. इट्स नॉट अबाउट आर्ग्यूइंग, इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग व्यूज. बिल्कुल चलता है यार. सबके व्यूज सिमिलर नहीं होते. सिंपल. कोई अपडेट नहीं है भाई. बोला तो नो अपडेट. एरिक्सन इंजरी भाई. एरिक्सन विल बी गोइंग आउट नेक्स्ट सीजन इन माय ओपिनियन. My view on City and United UCL journey. No, I think it will be between City, Madrid, and Bayern. For the title next season as well. United, if we are reaching quarterfinal, I will think we have done fine. I do play FPL.
मैं बहुत ज्यादा पूरे जोशो खरोश के साथ नहीं खेलता। आई प्ले फॉर फन, मेरे को मजा आता है एफपीएल खेलने में। नहीं है भाई रबिश, एज आई सेड गोरेत्सका लिंक सर एब्सोल्युटली रबिश। गोरेत्सका लिंक देखना बंद कर दो भाई, पैसे ही नहीं है। लिंक तो किसी से भी कर दो, वी डोंट हैव द मनी। भाई उनको इंस्टेबिलिटी के लिए ना और कुछ नहीं चाहिए, वो बस थोड़ा सा उन पे प्रेशर आने दो, उनकी इंस्टेबिलिटी अपने आप ही दिख जाती है। मैं देखो Inter got very lucky with the draw. I think apart from the brain fade from Napoli should have been playing the final. They had the team, but they just capitulated. And at the same time, when you look at the draw for City, that was crazy. Bayern, ठीक है, और बीच में ये था रियल मैड्रिड। सो वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लास्ट ईयर मैंने किया था, आई विल ट्राई इट अगेन। बट भाई आज थोड़ा वॉइस डिस्टॉर्टेड है, आई विल फिक्स इट आफ्टर द स्ट्रीम। आज ना माइक का कुछ इशू आ गया है, आई डोंट नो व्हाई। अनदर भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई ग्लेजर्स का गेम तो क्या ही बोलूं भाई मैं। ऑफ कोर्स भाई। भाई डेम्बेले क्या बोलो यार, डेम्बेले आई रियली लाइक दैट प्लेयर, बट क्या हुआ उसको स्पर्स में, एज पर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि भाई क्या क्या चीजें हो जाती हैं, तो क्या ही बोलूं। फर्स्ट भाई देखो, हैरी केन should have put up a transfer request by now, that's what I'm saying. हैरी केन अगर उसको एज अ एम्बिशियस प्लेयर उसको अगर रहना है, where people take him seriously, you will have to go out and you will have to put up a transfer request and you have to go to a bigger club and win trophies. तुमने प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा गोल मार लिया भाई, no one will remember अगर तुम्हारे पास ट्रॉफी नहीं है तो, सिंपल। भाई as I said, it all went wrong with his first season with Spurs, all went wrong। भैया मार्केट पे हमने बहुत बंदों को डाला हुआ है, बट वही है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर लुकिंग फॉर, वेदर वी आर गोइंग टू गेट इट और नॉट, दैट्स टू बी सीन। मार्केट पे तो बहुत बंदे हैं, डॉनी है, मगवायर है, फ्रेड है, मैकटोमिने है। Bentama didn't fail, समझा नहीं भाई। अच्छा, अरे सॉन में कौन सा एम्बिशन है भाई, सॉन केन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों में कोई वो नहीं है भाई। अच्छा वन्यामा फेलियर नहीं बोलूंगा भाई मैं, ही डिड वेल, वैल्यू के हिसाब से, पैसे के हिसाब से ही डिड वेल। हाँ समझ गया भाई, वन्यामा। भाई आई ऑलरेडी हैव अ पेड लीग, ठीक है, जिसको पेड वाली लीग ज्वाइन करनी होगी भाई मुझे बता देना, बाकी ये आइडिया पे डेफिनेटली आई विल ट्राई टू वर्क भाई, ठीक है। अभी भी है 10 दिन, आई विल थिंक अबाउट इट थोड़ा सा, उसके बाद फिर देखता हूँ। सर्जियो रामोस फॉर लीडरशिप, व्हाई नॉट यार, अगर ढंग के वेजेस पे आ जाए, व्हाई नॉट। सॉन इन बार्सा नेक्स्ट ईयर, आई डोंट थिंक सो यार, आई थिंक ये इधर ही रहेगा। वैन डर सार outright, वैन डर सार एंड नॉयर। भाई देखो यार, हेंडरसन इज नॉट पुटिंग अप एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। भाई as I said, we don't need him, I'm just saying if he's available for a free, ठीक है, 5th चॉइस मिलता है मैं ले लूंगा। मगवायर है भाई, जिस टीम के पास मगवायर है वो रामोस को क्या मना करेगा।
तो उसको टीम में कौन खिला रहा है भाई? वो अभी कहीं भी जाएगा, उसको फर्स्ट टीम कौन खिला रहा है? बैकअप ही रहेगा वो। निकेतन भाई वेलकम। नायक फेयर नाउ भाई, वायलेंट अनाउंसमेंट डिलेड भाई, बोल रहे हैं 3 दिन से है डिलेड, बट लेट्स सी। most likely on Saturday. Man, he played for a few years, but he never reached that level. He never reached that level after injuries. Strootman is one of those unlucky players there. Of course, simple सी बात है। हाँ भाई, मैंने इस पे डाला भी था पोस्ट, you know, that should have not been a problem at all in the very first place. उनको रोक भी क्यों रखा, I have no idea. Evans is close by. Best centre back in my lifetime, not for me. Not for me. भाई अब तुम जिगड़े वाले हो यार। तुम जिगड़े वाले हो, सिंपल सी बात है। I started watching United United had their double in the very first season. Of course, I do watch cricket. Ramos and De Gea, right? That's a very good shout. People are not talking about it enough. They can easily go to, Inter Miami. Why not? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। They are fearing, ठीक है? Since they are already at the club and protests are already planned. अगर वो प्रोटेस्ट के बीच में उन्होंने ग्रीनवुड अनाउंस कर दिया ना, स्टेडियम में लोग शीशे विशे तोड़ के घुस जाएंगे। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है भाई। दे हैव सीन एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देयर आई। उनको इंडिया की जनता और नाइजीरिया में बैठे हुए चूतियों से फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं। इंग्लिश पीपल आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द डिसीजन दैट अ क्लब इज गोइंग टू मेक। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनका कल्चर डिफरेंट है भाई। डेजिग्नेटेड भाई वही वाली बात है, दे ऑलरेडी हैव 3 at this point of time, but designated वो किसको ले रहे हैं वो देखने वाली बात है। डेजिग्नेटेड तो शायद एक ही होगा, डेजिग्नेटेड तो शायद एक ही होगा। But as I said, totally depends on the club. But people who are thinking that both the announcement will be made together, I think they are wrong. So let's see. भाई स्ट्राइकर ले आया, वही बहुत बड़ी बात है। भाई बेकहम इज टॉकिंग अबाउट कमिंग ओवर हियर, बट वही वाली बात है ना, अभी शेख जासिम तो आए पहले। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स। See, all of a sudden the news of protest is in the social media. All right, the announcement is delayed. They are saying that he has got some commitments as well. So it might be something else as well. But all of a sudden the takeover news is coming in. That the talks are ongoing. There has not been a decision made. It was absolutely silent for the last month or so. Now all of a sudden everybody is reporting because United fans, they have planned a protest before the Lens game on Saturday. So every PR agency, every journalist, paid journalist, now they are like, okay, let's write reports. जाएगा भाई जाएगा, कोई सीन नहीं है भाई। यार सच he was supposed to arrive a bit early, but that didn't happen. ठीक है, so that's why थोड़ा सा डिलेड है। बोल रहे हैं कुछ फर्दर कमिटमेंट्स भी हैं विद अदर अदर पीपल, सो लेट्स सी। आधी अधूरी बातें आ रही है भाई। प्योर स्पिन, एग्जैक्टली। भाई वो दे आर प्लेइंग देयर फर्स्ट टीम इन एवरी गेम, दे आर ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स। विंटर ट्रांसफर सी भी नहीं होगा भाई, विंटर में पैसे थोड़ी आ जाएंगे आदिल भाई। चलो फेयर इनफ सूरज। एग्जैक्टली, नल्ले हैं भाई ये। They have lost it. They have lost their mind if they think someone is going to pay 8 billion to them. भाई कैमरा तो होता ही है ना, he cannot do that.
जब तक तुम उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं करोगे, यू कैन नॉट मेक द प्लेयर प्ले. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो मुझे नहीं लगता होगा. चिराग भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. रमेश भाई, रमेश, ये डिलेनी प्लेनी को छोड़ो. डिलेनी प्लेनी को छोड़ो. जब तक इसके रिगार्डिंग ऑर्नस्टाइन या रोमानो कुछ नहीं बोलता, मत देखो भाई. नो वन, नो वन. Very little chance of selling anybody in January. Not according to me, but let's see. मेरा डिसीजन नहीं है भाई. Of course भाई. Since I have started watching football, that was the best United side, without a doubt. नहीं चाहिए भाई. ये कब फिर से चला जाएगा 6-8 महीने के लिए, you never know. Plus we don't have the money to get a striker. We have got our striker. अब कोई स्ट्राइकर नहीं आने वाला भाई, आंसर. चलो, गुड नाइट भाई, गुड नाइट. Exactly. Why we are not able to sell our players in the summer window yet, let alone the winter window. Absolutely, Niketan bhai. Bhai, as I said, Arteta is going all guns blazing. Simple. Bhai, I never saw 99 side, but I will take 99 side because they are the treble winners. सिंपल. जय भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द वॉइस. मैं इसको कल नॉर्मल कर लूंगा. आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है. कल इसको ठीक कर लूंगा मैं. ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड ब्रेकिंग. सो चलो, गुड नाइट भाई. भाई, he is very fast. When I say that he is very fast, people are like, अरे भाई, he is fast throughout the 90 minutes. वो कोई स्प्रिंट मार के ना बैठ नहीं जाता. He is always on the defender's shoulder throughout the 90 minutes. Absolutely, fact. भाई, ये इतने सालों से सो रहे थे. सौरभ भाई, not in my opinion. Not in my opinion. नहीं भाई, आज थोड़ा माइक का इशू आया है. माइक stopped working. I will look at it after the stream. Very easy. Hoyland will be around 65 to 70. ठीक है. Mount at this point of time will be 200 plus wages, plus performance based, and Onana is at 130. So we have done very well in terms of wages, to be very honest. Even for someone like Rashford, we have paid 325,000 per week. People were talking about 375, but वो सारा भाई performance based है. Totally depends on the performance. तो अगर खेलेगा अच्छा तो भाई तुम एक्स्ट्रा पैसे देने में भी कोई टेंशन नहीं है. अच्छा नहीं खेलेगा फिर टेंशन है. Praful bhai, welcome to the stream. Right there, they might, they have got Szoboszlai, but their midfield is nowhere there. McAllister, Szoboszlai, and they have spent 100 million, but they are getting money from Fabinho deal, they are getting money from Henderson deal. Okay. So they need players. And FSG वाला जो है, FSG का हाल भाई बिल्कुल Glazers जैसा है. It's just they got very lucky with the manager in terms of club few years back. And the signings that he made, that worked out. Highest wage, I think, is Haaland. Yeah, Haaland. Haaland is at around 450 or 500,000, something like that. After that, it's Kevin De Bruyne on 400,000. So Haaland is number 1, Kevin De Bruyne is number 2.
अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ी देर अभी चल रहा है, थोड़ी देर रखूंगा अभी। डेफिनेटली वी हैव 25 पीपल ऑन द स्ट्रीम, तो थोड़ी देर आई एम गोइंग टू कीप एंड देन मैं सोच रहा था भाई आज हॉलैंड का अनाउंसमेंट कर दे, बट आज वो हो नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली, हाँ, विद बोनसेस। मैं तभी बोल रहा हूँ ना, पीपल हु आर सेइंग दैट दे साइंड हालैंड फॉर 50 मिलियन, अरे भाई 50 मिलियन में घंटा हालैंड साइन नहीं हुआ। यू नो, यू गाइस नीड टू स्टॉप वरिंग। भाई ओवररन नहीं होगा, ओवररन नहीं होगा, बट हाँ, मोस्ट लाइकली वी कैन प्ले अम्राबाद, कैसेमीरो, माउंट एज वेल एज ब्रूनो। उसमें हम एक विंगर को नीचे बिठा देंगे एंड वी विल गो विथ हॉयलैंड एंड राशफोर्ड अप फ्रंट। ठीक है, तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। हम तभी चाह रहे हैं भाई अम्राबाद एज ही इज अ वर्कहॉर्स यार, ही विल कीप ऑन प्लेइंग फॉर 90 मिनट्स। वो 90 मिनट तुम्हारा भागता रहेगा। सो ऑब्वियसली ही वाज ऑन द लिस्ट। मैं मतलब ये सोचो, यू हैव मेड द साइनिंग एंड मेडिकल के बाद तुम्हारा अनाउंस करने में यू आर टेकिंग 3 days, क्या ही बोलूं मैं। वही तो बात है ना देवेंद्र भाई, इनको लगता है कि दुनिया चूतिया है, ये जो बोल देंगे वो हम मान लेंगे। ऑफ कोर्स, तभी तो बोला भाई कि अगर कल को तुम्हें 400,000 देने पड़े रैशफोर्ड को परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस, ठीक है, रैशफोर्ड के 35 गोल है सीजन में और उसने तुम्हें प्रीमियर लीग जिता दिया, तुम हंसते हंसते दोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। लोन, I want him to gain some muscle, to be very honest. He is direct, he is pacey, but I don't think he is going to make against the teams who will just bully him. You know, foul पे foul खाएगा, बहुत मुश्किल है। मैं भी already have Bruno, जो कि KDB के लेवल के परफॉर्मेंसेस दे रहा है। It's just he never had a striker properly, so अब तो आ गया स्ट्राइकर, अब देखते हैं। भाई मेरे हिसाब से एक गेम खेलेगा, whether he plays on Saturday or Sunday, let's see. भाई डिफेंसिव नहीं होगा ना, बिकॉज द पासिंग रेंज इज देयर। ठीक है, पासिंग रेंज एंड प्लस वी विल हैव पेस टू बर्न फ्रॉम द बेंच। अल्वारो फर्नांडिस टू लूटन, आई विल टेक एनी डे, मोस्ट लाइकली भाई, परफॉर्मेंस बेस्ड है। नहीं भाई, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वी माइट इवन प्ले फोर। जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे सिटी के अगेंस्ट व्हेन वी वन द गेम, ठीक है, सिटी के अगेंस्ट वी हैड फ्रेड, यू नो, फॉर द डर्टी वर्क। So at times you have to go with a plan like that. Of course, bhai, that's what I said, sort of, right? That's why I said the moment there is a news, okay, about the protest happening, there is a news coming out of, you know, there is news about what do you say, about ownership as well, you know, that the talks are going on and all that. So ठीक है भाई, स्ट्राइकर आ गया वो बहुत बड़ी बात है। एर्नेस्टो भाई खेलता हूं मैं, आई डू प्ले, मजे के लिए खेलता हूं यार भाई। परफॉर्मेंस बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड इट्स अप टू 800,000, ठीक है। जो फिक्स्ड है दैट्स 400,000। प्रफुल भाई सेइंग फिक्स जो है वो 600,000 हो जाएगा। He is not talking about performance based, he is talking without performances, within 25। Absolutely, भाई, that's what happens when you have a negotiator. You know, in the meanwhile, guys, as I keep on saying, hit that notification bell. Make sure that you are a part of the channel, part of the community. And if you can take the membership, do try it. We have around 60 members at this point of time. And if you guys can add up to that list, that would be great as well. Chirag bhai, as I said, I'm not surprised. Of course, भाई मैं श्योर हूँ, you know, मैं श्योर हूँ, ये यही सोच रहे हैं। Just imagine the moment the news of protest has started to come out, you know, तब से बिल्कुल ही जो है पीआर बिल्कुल चालू है इनका।
पीआर तभी से चालू है जब से ये प्रोटेस्ट की न्यूज आई है। As I said, by 20 to 25 million बस पैसे मिल जाए। दानिश भाई वेलकम। Of course 4 to 3 1 most likely है, most likely है भाई। totally depend in which side of Delhi he wants to stay, ठीक है। Plus whether he is staying with the family, whether he wants a PG, whether he wants to stay in a flat, बहुत सारी चीजें हैं। Got it, hold it back। Rajat bhai welcome। It's a matter of time, we are just waiting for Hoyland's announcement and then we will announce Ahmedabad। दानिश भाई अभी कोई सीन नहीं है, अभी कुछ नहीं चल रहा। Everybody is clueless as we are। नहीं भाई देखो, साइनिंग हम कर सकते हैं, we can spend 300 million, ठीक है। सपोज करो हमने 300 मिलियन खर्च दिए, बट बिफोर द नेक्स्ट समर, ठीक है, we will have to raise 180 million in sales, क्योंकि हमारा जो FFP जो बजट है that's 120 million pounds। At this point of time we have spent almost 180, ठीक है। So we have to sell। Ahmedabad आने के बाद we will have to raise around 75 million, which we are looking to raise from McTominay, Fred, and even Dean Henderson। So as I said, when you start to show the picture to the player, when you start to show the picture to the player कि भाई ये चीजें हैं, that's what the manager wants you to do, that's what your role is with the team। ऐसा नहीं कि भाई you just go over to that player and you have absolutely nothing in mind and they're like we will give you this many wages, come to United। That's not how it's gonna work, simple as that। Ahmedabad भाई Hoyland के बाद होगा, we will have to wait for Ahmedabad होगा, बट एक बार हॉयलैंड की अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद ही अहमदाबाद होगा, एज सिंपल एज दैट। समीर भैया वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई एक बार मुझे एरिया पूछ के बताओ, हर जगह मतलब मुझे एक एरिया का आइडिया दो, ठीक है। उसके बाद वेस्ट दिल्ली भाई बहुत बड़ा है। कतारी भाई देखो वो तो नहीं होने वाला, वो तो नहीं होने वाला, वी ऑल नो दैट। भाई as I said 20 to 25 I will take, 20 to 25 I will take। Of course Lens are a very competitive team। Do you think United will become Barca? भाई देखो, if you are not clearing your debt, you can, be in huge trouble। It's just our revenue sources are so high, so we are still surviving। Otherwise तो अभी तक हमें निकाल दिया होता। सिंपल सी बात है, हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज आ रहे हैं, so at this point of time we are surviving, but हाँ, our debt is too much, almost 800 million pounds, which is a crazy amount of money। अच्छा, उत्तम नगर में तो भाई चीप ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। उत्तम नगर में वेरी चीप ऑप्शंस आर अवेलेबल। हनीबाल स्टेज मोस्ट लाइकली, अगर डॉनी को जाने दे रहे हैं and we are not going to invest money, then Hannibal is a very good option। simple as that। उसको रख सकते हैं, whether it's gonna work out or not, I still feel कि अगर डॉनी गया और अगर पैसे हैं, so why not, even might try for a different player if you have the profile in mind। डॉनी गया तो most likely he will stay, right? Of course a center back and a right back, a center back and a right back, that's for sure। I have been saying this।
आर्सेनल लूजिंग 1-0 किसके अगेंस्ट खेल रहा है भाई? मैंने तो देखा भी नहीं। हु आर दे प्लेइंग अगेंस्ट? Manu will be back in 2 to 3 months, guys. 2 to 3 months. Amrabat के बाद कोई signing, I don't think it's gonna happen. That's my personal choice. You know, that was my personal thinking. My bad. Monaco, चलो बढ़िया है. Do you think? Of course, भाई. Of course खिला सकते हैं. Not in every game, but in certain games we can definitely do that. In certain games we can definitely do that. Not in all the games, of course. Certain games. By injury was the key factor, and then Wan-Bissaka didn't let him get any chance to get back in the team. I won't say a very good option, but a very, but a good option. Very good पे नहीं कहूँगा, good option. समीर भैया अगर ऐसा हो गया ना, सच बता रहा हूँ, मजे आ जाएंगे. अगर ऐसा हो गया तो मजे आ जाएंगे. भाई they are taking Raya for a reason. हमें सिटी थोड़ी देगी भाई. City are not going to give us. Simple सी बात है. Barca try कर रही है Cancelo का. I am keeping an eye on that situation as well. Barca wants Cancelo. So let's see what happens. Why United is not signing a CB? Because before we can sign a CB, we have to get rid of the CB, which is Maguire. उसके अलावा it's not possible. उसके बिना ये possibility है ही नहीं. 4 feet for City, likely, to be very honest, very likely, but hopefully we can stop it. My ball playing ability is better than Varane. Positioning he can learn. Okay, and that will, I think, come with playing big games with experience. But passing overall, वो Varane से थोड़ी better है, definitely है. So credit where it's due. Exactly. मतलब he is versatile, but then उसके limitations हैं. Versatility है. He has done well in the Bundesliga, but in Bundesliga में he played for the best team. As simple as that. No, we won't match Kane. We won't match Kane. No chance at all. Most likely, Anubhav bhai, it might happen. It might happen, but then McTominay needs to go because we need money. बिना McTominay के, the way we are trying to do things, it's not gonna work. ठीक है? Amrabat लाते हैं तो McTominay का पत्ता in my opinion कट है. बिल्कुल. चलो. भाई डिसासी वही वाली बात है. I said we are not going to get any centre back. We are not going to get any centre back till we get rid of Maguire. That's the problem. Martial free agent नहीं भाई. He got one more year. भाई Italian CVs don't want to move from Italy. That's the thing. भाई देखो मैं डिसासी ही चाहता. In terms of experience, I would have gone for Disasi. Simple. But for Debo, I will take any day.
नहीं भाई, नहीं. Bayern, if they get a striker, it will be very difficult. Real Madrid ka midfield, very difficult. We can give them a good game, but over 2 legs, I don't think we will have enough. So, let's see. Why fear Johnny Vance is here? Of course, bhai. Of course. People need to realize that. People need to realize that. Simple. अरे भाई जनवरी में कैसे चले जाओगे यार? जनवरी में क्या झाड़ से पैसे गिरेंगे मेरे को बताओ. I really want to know. People who are saying जनवरी जनवरी, कहां से जनवरी? पैसे कहां से आएंगे भाई? There's a supply is loading in the season. हाँ, I totally understand, भाई. But I don't think कोई surprise आ बचा है. Thought on Mbappe situation. भाई, honestly speaking, he should have left for किसकी तरफ से bid आया था यार? Al Hilal. He should have gone to Al Hilal for a year and then moved to Madrid. क्योंकि भाई PSG जो है ना उसको एक साल बेंच पे बिठा देगी. PSG have totally lost it. They have lost their patience. Part 2. भाई जॉनी वांस आई विल टेक बिकॉज भाई मैगवायर है तो अब जॉनी वांस ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है. You know, it's as simple as that. भाई PSG at fault. It's PSG who is at fault. They could have easily made money. They could have easily let him go. बट क्या बोलूं मैं भाई? फिर मैं एक ही सवाल पूछूंगा, पैसे कहां से आ रहे हैं जनवरी में? पैसे कहां से आ रहे हैं जनवरी में? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट द ग्रुप स्टेजेस टू बी वेरी इजी. टुच्ची मुच्ची टीम दे दो, ग्रुप स्टेजेस मुझे इजी चाहिए. भाई ये पॉट वाला कल डिस्कस कर सकते हैं. मैंने पॉट देखा था यार. ऑब्वियसली वी कैन नॉट हैव but we can have, I think, बारसा मिल सकती है हमें हमारे पॉट में. We can have पोर्टो as well. So मतलब ठीक ठाक पॉट मिल सकता है हमें. In our pot, Real Madrid is there. In our pot, we have Arsenal as well. So obviously Arsenal तो वैसे ग्रुप स्टेज में मिलता नहीं, सिटी ग्रुप स्टेज में मिलता नहीं. Exactly. They should have taken the money. अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है. Exactly. नहीं विजय भाई, आर्सेनल नहीं हो सकता भाई. We cannot get Arsenal. Arsenal from the same league. ग्रुप स्टेज में सेम टीम नहीं हो सकती from the same league. CL draw I think is on 31st of August. CL ड्रॉ जो है हमारा 31st of August है मेरे हिसाब से. डेट चेंज ना हो तो. So let's see how it goes. Hamza bhai, we have put a lot of people on the outgoing list, but unfortunately na, the amount that we are asking for certain players, like if we are asking for 50 million or 40 million for Maguire, it's not going to happen. If West Ham pays 30 million, let Maguire go. At least let them talk to Maguire, because Maguire is not willing to leave anyway. मैं वही बोल रहा हूँ, Mbappe, Vinicius both wants to play on the left hand side. ठीक है. Mbappe don't want to play as a striker. So feud तो भाई हो सकता है. So let's see. 9 points on Wolves, Spurs and Nottingham. Hopefully, fingers crossed.
I think they will. I think they will. They don't have a out and out striker yet. Hoslu is there, but Hoslu is not the in the mold of Mbappe, you know, or even they have replaced Benzema. So he's not in the mold. He's not even close. So भाई देखो, मैं वही बोल रहा हूँ फॉर चैंपियंस लीग मुझे थोड़ा सा इजी चाहिए सो दैट वी कैन फोकस ऑन प्रीमियर लीग एज वेल, यू नो, बिकॉज वी हैव सीन कि भाई वो चीज चलती रहती है. दैट्स आवर प्रॉब्लम कि भाई एक जगह पे जहां पे टफ सिचुएशन आई बट वी हैव सीन एरिक टेन हाग, उसको भाई सब कुछ चाहिए. ही वांट्स टू गो फॉर एवरीथिंग. नहीं भाई, he won't get number 9. Most probably he will get number 17. तब भी नहीं होगा भाई, तब भी नहीं होगा. तभी हमारे पास 50-60 मिलियन ही एक्स्ट्रा आएंगे, तो कोई नाच वाच नहीं होने वाला. यू नो द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, उसमें नाच का कोई ऑप्शन नहीं है. भाई वरान को दे देना चाहिए था, बट नाउ दैट वी हैव नॉट गिवन हिम, आई डोंट थिंक ही विल गेट इट. अदरवाइज उसको अभी तक दे देते. सिंपल. अरे अरे राहुल भाई, ग्रुप ऑफ डेथ तो नहीं चाहिए भाई, क्या ही बोलूं मैं. डेम्बुलेंस यार, अब जा रहा है, देखो क्या ही होता है. भाई उनको पता, यूएसए में यहाँ पे फुटबॉल को जो सॉकर बोलते हैं वो प्रोटेस्ट क्या करेंगे भाई. जो फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं वो क्या प्रोटेस्ट करेंगे. उनसे उम्मीद मत रखो भाई, उनसे उम्मीद मत रखो. इट विल रिमेन अ क्वेश्चन फॉर स्टिल फॉर सम टाइम. मैगवायर की ऐसी की तैसी, हमें मैगवायर से थोड़ी बेस्ट निकलवाना है यार. मैगवायर में हम फेंकने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बेस्ट निकलवाना चाह रहा है. भाई मोस्ट लाइकली बैन बिसाका जाएगा यार, बिकॉज वी जस्ट गिव अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अभी हमने जस्ट एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है डलो को, तो मुझे नहीं लगता वो जाएगा. तभी एफएफपी रहेगा भाई. अगर वो डेप्थ हटा देंगे तो वी विल हैव 70 मिलियन एक्स्ट्रा. सिंपल. 70 मिलियन एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास. ऐसा नहीं है कि भाई खजाना आ जाएगा कुछ. Well, obviously not everybody is like that. Not everybody is like that. But I'm just saying कि भाई वो उनको प्रोटेस्ट नहीं करना. सिंपल सी बात है. भाई पैसा है तो क्या नहीं हो सकता. भाई चेल्सी वांटेड अ स्पॉन्सर व्हिच वाज अ गैम्बलिंग कंपनी. ठीक है, तो उसको ना बैन कर दिया, क्या बोलते हैं, एफए ने. सो नाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड वन, आई थिंक, यू नो, आई थिंक दे हैव गॉट वन, बट उसको अभी तक शायद जर्सी पे नहीं डाला है. दे हैव मैनेज्ड टू गेट अ डील विद सम कंपनी. ठीक है, शायद सॉफ्टवेयर कंपनी है या समथिंग लाइक दैट. मैंने उसका नाम कुछ देखा है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा चेल्सी के स्पॉन्सर्स का नाम. भाई वही वाली बात है. It's Champions League. You will face the Spanish clubs. It's as simple as that. So, guys, with this, I will be ending tonight's stream. We have talked about the number of players that we have put up on the transfer window. So, भाई देखो, you know, point to point बात करना is always good. Sorry, point to point बात करना is always good. So, exactly.
नहीं करेंगे भाई, कचरा थोड़ी उठाना है हमें। अगर भाई मैं सच बताऊं, एडवर्ड होता ना, वो नेमार उठा चुका होता अभी तक, मैं सच बता रहा हूँ। वो नेमार के लिए एक बिट तो जरूर डालता क्योंकि उसके जर्सी बिकती। बट एनीवेज गाइस, वी हैव टॉक्ड अबाउट डॉनी, we have talked about Maguire, we have talked about Fred, we have also talked about Martial. There was a bit, apparently he said no to Saudi. I am not 100% sure about that news, but Donny is most likely to leave. McTominay, Fred is most likely to leave. Maguire, he doesn't want to leave, but West Ham are very keen on having that player. So these sort of things are going on. Hoyland deal is most likely to happen, officially announced by Saturday. So keeping fingers crossed, we have the game on Saturday as well, and I will be doing the watch along. So join in as well. See you guys tomorrow night at 10, and hopefully we will have more news, positive news regarding Amrabat as well. Keeping an eye on everything. Stay tuned to the channel regarding every news with the help of the notification bell on. So yes, hopefully Rasmus, and good night guys. Take care, stay safe, and have a great time with your families.